Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 6 of conditional sentences. In this lecture, we will learn about the exceptional cases in the conditional sentences. As with the most cases, most topic in the English language, the conditional sentences often present special cases in which the unique rules must be applied. So generally speaking, the simple future should be used only in the main clause. अमूमन हम ऐसे ही करते हैं कि simple future tense को मेन क्लास में यूज़ करते हैं, वो भी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में. वन एक्सेप्शन इज व्हेन द एक्शन इन द इफ क्लास विल टेक प्लेस आफ्टर, यानी इफ क्लास में जो एक्शन है वो बाद में परफॉर्म किया जाएगा, द एक्शन इन द मेन क्लास, और जो मेन क्लास का एक्शन है वो पहले परफॉर्म किया जाएगा. सो वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू द एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, इफ एस्पिरिन विल ease my headache, I will take a couple tonight. So try to understand it. If aspirin will ease my headache, and we know that aspirin will work after taking it. So which action will be performed first? Taking the couple of medicine, taking a couple of aspirin. तो पहले मेडिसिन ली जाएगी, उसके बाद वो उसका इफेक्ट होगा. So the if clause is there. If aspirin will ease my headache, so this action will be performed later. I will take a couple tonight, and this action will perform first. That is why we are using will plus first form in the if clause. हमने if clause में simple future tense यूज़ किया है, क्योंकि if clause में बताया गया जो action है वो बाद में परफॉर्म होगा, और जो मेन क्लास का एक्शन है वो पहले परफॉर्म किया जाएगा. अदरवाइज़ हम जितने सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं उसमें इफ़ क्लास, जिसको हम कंडीशन क्लास कहते हैं, वो पहले परफॉर्म होती है और बाद में मेन क्लास के अंदर जो सिचुएशन, जो रिज़ल्ट है वो सामने आता है. लेकिन यहाँ कंडीशन डिफरेंट है कि इफ़ क्लास के अंदर बताया गया एक्शन बाद में परफॉर्म किया जाएगा और जो मेन क्लास के अंदर एक्शन है वो पहले परफॉर्म होगा. द एक्शन इन द इफ़ क्लास इज़ द एस्पिरिन ईजिंग द हेडेक, which will take place only after the speaker takes them later at night. So this is a situation, we call it an exceptional case in conditional sentences. There is another exception कि were to use करते हैं, were to in the if clause. The verb phrase were to is sometimes used in the conditional sentences when the likely or unlikely result is particularly awful or unthinkable. यानी जो consequences हैं, ये result है, वो पॉसिबल भी हो सकता है और बाज़ वक़्त इम्पॉसिबल भी होगा, लेकिन वो होगा ऑफल होगा, वो अजीब रिज़ल्ट होगा या ऐसा होगा जिसके बारे में हम आम तौर पर नहीं सोचते. इन दिस केस वर टू इज़ यूज टू प्लेस एम्फेसिस ऑन दिस पोटेंशियल आउटकम. तो हमने इस आउटकम के ऊपर स्ट्रेस लेकर आना है, इसको इम्पॉर्टेंट शो करना है. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग वर टू. We take some example. If I were to be sick, I would miss another day of the work. So we know that no one wants to be sick. कोई भी नहीं चाहता कि वो बीमार हो जाए. So if I were to be sick, I would miss another day of the work. अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं एक और दिन ज़ाया कर दूँगा. So this is awkward situation if someone wants to be sick. If she were to be late again, she would have to have a conference with the manager. अगर दोबारा लेट होती है तो उसको कॉन्फ्रेंस, उसको मैनेजर के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, मैनेजर के पास जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो द सिचुएशन इज़ अगेन अनथिंकेबल और ऑकवर्ड सिचुएशन इफ़ शी वर टू बी लेट अगेन. तो कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने काम पर देर से पहुँचे. सो दिस सिचुएशन इज़ ऑकवर्ड. इफ़ द रेंट वर टू हैव बीन अ पेनी मोर, अगर जो रेंट है, जो किराया है, वो एक पेनी, एक सिक्का भी ज़्यादा होता, दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू पे इट, तो वो उसको अदा ना कर सकते. सो द रेंट वर टू हैव बीन पेनी मोर, अगर किराया ज़्यादा होता तो वो ना दे सकते. इट मीन्स नो वन वांट्स टू हैव पे मोर रेंट. कोई भी नहीं चाहता कि वो उसको जो रेंट है वो ज़्यादा देना पड़े. सो अगेन द सिचुएशन इज़ अनथिंकेबल एंड ऑकवर्ड. दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड वर टू. Note that the emphatic were to can be used to describe the hypothetical scenarios. Hypothetical हैं, we just can assume about them. In the present tense, future tense and the past tense, तीनों tenses में आप were to use कर सकते हैं अगर आपने situations को
कंडीशनल सेंटेंसेस में शो करना है। सो पंक्चुएटिंग द कंडीशनल्स, कहाँ पे हमने पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने हैं। यूज़ अ कॉमा आफ्टर द इफ़ क्लास, जब भी इफ़ क्लास ख़त्म हो जाए तो आपने वहाँ कॉमा ऐड करना है। व्हेन द इफ़ क्लास प्रीसीड्स द मेन क्लास। इफ़ like these are examples, if I had time, sorry, if I had time, I would have cleaned the house. सो इफ क्लास के बाद हमने कॉमा यूज किया है। इफ द मेन क्लास प्रीसीड्स द इफ क्लास, नो पंक्चुएशन इज नेसेसरी। अगेन वी हैव यूज्ड इफ द मेन क्लास प्रीसीड्स द इफ क्लास, यानी मेन क्लास अगर पहले लिखते हैं और इफ क्लास बाद में आएगी तो फिर आपने कॉमा नहीं लिखना। लाइक आई वुड हैव क्लीन द हाउस इफ आई हैड टाइम। तो अगर आपकी इफ क्लास जो है वो बाद में है और मेन क्लास आप पहले लिखते हैं तो फिर हम कॉमा ऐड नहीं करेंगे। So this was the end of the last lecture of conditional sentences, in which we have learned about the exceptional cases. So I would request you to like this video, share with your friend and subscribe the channel. Thank you so much. If you have any question, you can write in the comments. Thank you. Allah Hafiz.